They've taken 20 days to tell us that the Congress party will not be a part of the consecration ceremony of the Ram Mandir that happens on the 22nd. Now look at the reasons that the Congress has put forward. The Congress says that this is a BJP/an RSS event, and also trying to underscore that religion is a matter of personal faith. But on that premise, you have a lot of other INDI alliance leaders also now. Some of them who've been invited now saying they will not be a part of the entire consecration, and some like the Janata Dal United and the Uddhav Shiv Sena who've not received an invite till now saying we will decide once the invite comes in. On the other side, you have a lot of the usual suspects, like the BJP calls them, the left, that was the first to say that we are not going to be a part of the ceremony. Even the Rashtriya Janata Dal and the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav now saying, I am not going to be a part of the entire ceremony. Now, this means that a lot of politics, the Mandir politics in particular, is going to peak in the run-up to the big battle of 2024. A lot of questions today going out to the Congress that many say itself has used Lord Ram. We have seen Congress netas like Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, temple hopping, visiting the Mahakal temple with the Janeu and a lot of other things close to a lot of elections. So why is the Congress today not wanting to be a part of this grand ceremony is what a lot of people are asking, including the BJP. Before we move ahead, let's quickly make way to listen into all the reactions we have from not just the BJP that hits out at the Congress, but a lot of other INDI alliance partners on their stand on the Ram Mandir invitation. Politics and religion must remain separate. One should not mix politics and religion, elections and religion. It is violative of the fundamental principle of our constitution. मैं मानता हूं कि इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इर्द गिर्द भी आप राजनीति करेंगे। मेरे और मेरे राम के बीच में सीधा ताल्लुक, गांधी मंदिर जाकर के राम भक्त नहीं बनते थे। It's not been imposed by us or any political party, but seers and praised by themselves. This is the situation. So why should Congress party, President Sonia ji and a leader of opposition Adhir Ranjan should join it? So you heard reactions from the left, from the RJD and also the Congress. Remember, the Congress High Command, that is Jairam Ramesh, releases a full statement yesterday that many say is not even nuanced properly. All that it does is that it declines to be a part of the consecration ceremony. But a lot of Congress leaders internally have been taken by surprise. There are some who believe this is political suicide. There are others who believe that Ram ka vishay aastha ka vishay hota hai. And that is the reason why we have multiple leaders from the Congress, a lot of them who are now speaking up against the line that has been adopted by the Congress High Command. And do remember, the UP Congress chief himself has said that most of the netas, about 100 of them from the Uttar Pradesh Congress, will be visiting Ayodhya on the 15th. So is there an open divide in the Congress on the issue of going to the Ram Mandir or not going? जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूँगा। इसके लिए मैं निमंत्रण देने वाले सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जाना तो हम रोक नहीं सकते, जो जाने वाला जाएंगे, उसमें कोई कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। हमारा भी आधा लोग जाएंगे, कांग्रेस का वोटर जो है आधा लोग उधर राम मंदिर में रहेंगे। ऐसा नहीं है वो पूरा बीजेपी का है, आरएसएस का, ऐसा नहीं। हमारा भी आधा हिस्सा है उधर, हमारा लोग आधा जाएंगे।
जाने वालों को हम नहीं रोक सकते, उनका भक्ति है, उनका प्यार है, वहाँ भगवान के ऊपर जितना प्यार है वो जाएंगे। ऐसा तो पार्टी से हम नहीं रोकेंगे किसको भी। आपको लगता है कि इसको बीजेपी आरएसएस इवेंट नहीं कहना चाहिए कांग्रेस लीडरशिप को, कांग्रेस हाईकमांड को, क्योंकि लगातार ये भी बात कह रहे थे कि भगवान राम सबके हैं, उसका बीजेपी पर कॉपीराइट नहीं है, और दूसरी तरफ राजनीति करना राम पर ये नहीं होना चाहिए, और जाना चाहिए कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी पे, उद्घाटन पर जाना चाहिए। देखिए, अगर मैंने बोला ना, वो अभी उनका राय है, इंडिविजुअल है, ऐसे तो हम फोर्स नहीं कर सकते आप मत जाओ, उनका प्यार से वो जा सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं, जाना चाहिए, ऐसा पाबंदी नहीं, जाना चाहिए। आपको लगता है कि ये मौका है कांग्रेस के लिए दिखाने का भी कि नहीं, जो राजनीति है, सेक्युलर राजनीति है, एंटी हिंदुत्व माइंडसेट नहीं है कांग्रेस का, जा करके एक बड़प्पन भी दिखाना चाहिए था, इन्विटेशन को स्वीकार करना चाहिए था? ठीक है, हमारा पार्टी का डिसीजन है वो, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा इंडिविजुअल राय है, कोई भी जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है, वो बीजेपी का फंक्शन नहीं है, पूरा देश का है, पूरा भारत देश का फंक्शन है, जा सकते हैं उनको। क्यों लीजिए, आप भी जाएंगे? क्योंकि इनविटेशन कई सारे लोगों को मिला है, कई सारे लोग हैं जो भगवान राम को मानते भी हैं, उनकी आराधना भी करते हैं। कर्नाटका के बहुत सारे लोगों में भी इच्छा है कि वो जाएं वहाँ पे, तो कांग्रेस के एक बड़े तबके को, डेलीगेशन को जाना चाहिए जिनका मन है। जरूर जाना चाहिए, ऐसा नहीं आज ही जाना चाहिए, वो तो जब तक जमीन रहेगा तब तक राम मंदिर रहेंगे, नहीं आजकल 22 तारीख को खत्म नहीं होने वाला एक दिन में, पूरा जब तक जमीन रहेंगे तब तक राम मंदिर रहेंगे, बाद में जाएंगे हम, जल्दबाजी क्या है, बाद में सब पूरा डेलीगेशन लेके जाएंगे हम। So these are reactions you've heard from the Congress camp, and not to forget the former Chief Minister of the state of Madhya Pradesh. Remember, Kamal Nath himself was one of the first votary to say that I will be going to the Ram Mandir. And in fact, he calls himself a Hanuman Bhakt. So much ado about nothing when it comes to the Congress's camp, but what about the other parties? The other parties in the INDI alliance, this includes the Samajwadi party. Now, Akhilesh Yadav, you would recall, till he receives an invite, he says, "Hum jayenge, hame invitation hi nahi aaya." But when he gets the invite, now he says कि हमें जिनसे invitation मिला है, these people are strangers. So this again makes you ask the question that is the entire INDI alliance decided, and will they be backing the Congress's call of not being a part of the consecration? But the SP, ladies and gentlemen, is also dealing with a lot of dissent. Multiple netas in the Samajwadi party again have spoken up, and in fact, even local karyakartas say that this stand of the Samajwadi party might backfire. देखिए, ये मैं विधायक के तौर पे मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, और मैंने लिखा भी है कि मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों को 22 तारीख को भगवान राम की प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ले जाया जाए। और विधानसभा अध्यक्ष जी से मैंने इसलिए मांग किया है कि विधानसभा अध्यक्ष हम लोगों के विधानमंडल दल के संरक्षक होते हैं, और ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब जिसको भगवान जहाँ बुलाएगा वहाँ हो जाएगा, बिना उसकी इच्छा के एक पल भी इधर उधर कोई नहीं हो सकता है। आप ये बात कह रहे हैं, और आपकी ही पार्टी के सर राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो जो एग्जिस्टेंस है उसको लेकर सवाल कर रहे हैं, जो गोलियां चली थी कार सेवकों को उसको लेकर बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दे दिया है, कोई धर्म पे बात नहीं करेगा। कल उन्होंने निर्देश दिया, पहले भी उन्होंने निर्देश दिया, अब समय आ गया है कि अगर इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो उनको नोटिस दी जानी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चर्चा तो पहले भी हो चुकी है ना सर, जब पहले वो परशुराम को लेकर कह रहे थे, पहले सनातन धर्म को लेकर कह रहे थे, एक इंटरनल बैठक में उनको लेकर कलह भी हुई, विधायक भी आपस में आमने सामने आ गए। आप क्या मांग, आप लोगों को लग रहा है कि वो रुकेंगे, इस बात के बाद भी रुकेंगे? वो उनका व्यक्तिगत मत होगा। मेरा अपना मानना है कि समाजवादी पार्टी में लाखों लाख कार्यकर्ता ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो सनातन को मानते हैं, जो भगवान राम को मानते हैं, और अगर कोई बयान देके उनकी भावनाओं को आहत कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी जी को क्या कहेंगे आप? अपनी तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य मिले तो उनको क्या कहेंगे, क्या समझाएंगे कि सनातन की समझ उनको आए कि ये रुके ना? बड़े लोग हैं, उनको हम क्या समझाएंगे, वो अपनी बेटी को पहले समझा लें, फिर हमसे समझने का काम करेंगे। सर, मायावती जी को लेकर चर्चा हुई है, अखिलेश जी का स्टैंड बदलता हुआ दिखा है, पहले जो चीजें ना होती दिख रही थी उन्होंने कहा कि काफी सम्मान करते, क्या लगता है गठबंधन में आएंगी वो? देखिए, उत्तर प्रदेश की 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती जी, और हम लोग बुआ रूपी उस पे देखते हैं किरदार में, तो निश्चित तौर से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मायावती जी सम्माननीय है, और बड़ों का सम्मान करना, आदर करना हमारी संस्कृति है, हमको यही सनातनी सभ्यता है और उसको हम करते रहते हैं। And our colleague Ajay Dubey is also joining us from Lucknow to give you a larger insight into how this issue is going to be playing out politically. You know, Ajay, where you are, in the state of Uttar Pradesh that has 80 Lok Sabha seats,
a lot is at stake. You know, the reason why the BJP is going all out, Ram Mandir, many say is going to be a huge issue. But what about parties like the Samajwadi party? Because, you know, the Congress might not have a stake in Uttar Pradesh, but what about the SP? Has the SP firmly decided it will not be a part of the ceremony? Samajwadi Party, there are two strands in Samajwadi Party. Akhilesh Yadav is continuously saying that when Lord Ram will call, when Bhagwan will call, then I will go. He's saying this line, but the MLAs, let's talk about the MLAs, the leaders of the party. A few days back, a leader from Samajwadi Party, he wrote a letter to the Speaker of Assembly. He said, we all MLAs want to go to that event, and the Assembly Speaker should arrange things. So there's a different stand for the leaders of Samajwadi Party. And one more important thing, it is about Swami Prasad Maurya, the big buzz maker politician in Uttar Pradesh, is continuously still making comments about Sanatan Dharma, about Lord Ram, about various things. And now leaders of Samajwadi Party, MLAs from Samajwadi Party, they are opposing this thing very ugly. So they are saying that this thing should not come in public. Swami Prasad Maurya should not say this thing. Even Muslim leaders, Muslim MLAs of Samajwadi Party, they are also saying this thing, and this thing is not told to Akhilesh Yadav very clearly that this will not work. And Akhilesh Yadav made this thing very clear to his own leaders, to his people, that he will take care of this thing, and he will make it very clear to Swami Prasad Maurya that he will not make any comment in future either, or he will get a notice from Samajwadi Party. So now Samajwadi Party is, we can see there are two stands in Samajwadi Party. Akhilesh Yadav is saying that when Lord will call him, he will go at that time, and the MLAs of Samajwadi Party, they want to go to this event. Okay, Ajay, for the moment, thank you for getting us all those details. We'll wait and see what happens, whether these are parties that will be seen at the consecration or they decide to together boycott that big day and that big moment. As I say, thank you to him. But remember, it's also important to put into perspective the entire story. The BJP, as expected, has responded. They've responded sharply to the kind of responses that have come in from the INDI alliance leaders and the Congress. And the BJP maintains that this is the reason why the Congress has all along been anti-Hindu. I think they should not get into this low level. They should not come up to this low level. Everybody should have their own way of expression, but nobody should criticize the national sentiment. I think they will realize at one point of time they should participate in the Utshav. Do you think this will be negative for the Congress themselves? I don't want to comment on that. I have my own faith and belief. I expect as a citizen, everybody from the Indian civilization should participate in the glorious moment of our civilization. आज जब अयोध्या में श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि यह भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है, यदि आजादी 800 साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में, यद्यपि कांग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी, हम कहते हैं 800 साल की गुलामी, तो यह 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वह स्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है जिसके के लिए सरदार पटेल ने कहा था सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय कि जब जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने आकाश को छुआ था। और उस अवसर पर यहां एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप है। ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। नैतिक ताकत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस नहीं की है, तो इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। जो लोग राज्यों में हैं कांग्रेस के लोग, वो भी कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस अब
हमको कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलना है और न कांग्रेस को करना। कांग्रेस अपने आप से समाप्त होने वाली पार्टी है। So even as the BJP continues to reiterate that this is going to be very, very difficult for the Congress to defend, and again, the Congress has portrayed its anti-Hindu mindset. Even top seers have now spoken up. Acharya Satyendra Das, who remember has been in Ayodhya for the longest time, and he's really worked hard to ensure that there is a Ram Mandir in Ayodhya, and he's waiting eagerly for that big day, also says that this is a sentiment that will not be welcomed by millions of people across the country. तो कोर्ट के अनुसार कार्य हो रहा है। अब रही बात की वो राजनीति है, तो कांग्रेस वाले ने पहले भगवान को कह दिया कि वो काल्पनिक हैं, उसके बाद उनको नकार दिया कि कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब भगवान के जिस प्रतिमा की, जिस मंदिर की यह निर्माण हो चुका है, जिसमें भगवान की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा होकर के 22 तारीख को हो जाएगी, तो इसके बाद ये अपने काज कर रहे हैं और वो अपना काज कर रहे हैं। जिस प्रकार से कहते दीजिए, लेकिन निश्चित यह है कि जो काज हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला स्थापित होंगे, और जिसको जो बोलना है बोलते रहेंगे। कांग्रेस इसलिए बोलती है कि वो निमंत्रण तो दिया गया है और वो आएंगे नहीं, कहाँ आएंगे? जिस राम के अस्तित्व नहीं है वो कहाँ आएंगे, किसको देखने आएंगे? इसलिए उनके जो बोलना है सब मिथ्या है, सब झूठा है और एक राजनीति से प्रेरित है, जिसकी राजनीति से प्रेरित होने के कारण से यहाँ राम के भक्ति में, राम की प्राण प्रतिष्ठा उनकी कोई आवश्यकता नहीं। So is this really vote bank over Ram Bhakti? And what about the huge divide in the Congress's own camp? Will the Congress be able to defend its decision? Will the Congress be able to create a narrative? Or you believe that this is going to be a political suicide for the Congress on the road to 2024? As always, you can tell us what you think. The best of your opinions, suggestions will also feature on republicworld.com.